Everybody. So in this video, we will see some of the English grammar questions which have been set for the examination of MTS 2023, which was conducted by APSSB. So this video is absolutely very much useful for the candidates who are going to appear the upcoming CGL examination, which is going to be conducted by APSSB again. So we will see the questions and we will slowly try to understand the concept behind of it because the questions are very basic, but the basic logic if we use, so you will be able to answer all these questions. So questions are very easy. So you will try to understand logically with the answer. So let's begin. So there are total 40 to 45 questions are there. So you will try to solve at least 20 questions in this video and the rest of the questions you will see in the next video. So let's get started. So the first question which is given here, it is that fill in the blanks with appropriate prepositions. So preposition is there in the syllabus of APSSB CGL examination as well as MTS and LDC examination. So let's see what is the first question. It had a small kitten garden dash the back. So there the options are given here: in, at, but, up. So first, definitely whether there are such kind of options, we will use elimination method, that is but. Obviously there should not be but, so but is eliminated. Then up is also eliminated. Now the question comes in or at, right? So among in or between in or at, what is the correct answer? So we know that actually what happened. So when you use in, generally in is used when there is something kept in a closed place. Like suppose I kept my sweater in the closet, correct? So there is closed place if something is kept in the closed place, like shelf, like box or something like that. So we use in, and at generally is used when something is out, something is kept out of something. Like suppose, okay, I kept my car at the gardens, right? So similarly, with that logic, we can easily answer the question. So what is the answer of the question here? At is the correct answer. So it had a small kitchen garden. Sorry, it had a small kitchen garden at the back. So garden जो है वो बाहर में है. So बाहर में है means at हम use करेंगे. अगर किसी चीज के अंदर में होगा किसी, तो हम in use करते हैं. ठीक है. So next question. So the students had a tussle. So meaning of tussle is difficulties or fight with something, physically engaged in some fight. So the students had a tussle dash the words. तो इसमें से हम करेक्ट आंसर है टसल के साथ हमेशा फॉर आता है या फिर ओवर आता है. हाँ, टसल के साथ हमेशा फॉर आता है या फिर ओवर आता है. तो इसमें फॉर दिया हुआ नहीं है, ओवर है. सो ओवर इज द करेक्ट आंसर. ये ओवर इज द करेक्ट आंसर. टसल ओवर मतलब ये होता है कि किसी चीज के लिए स्ट्रगल करना, किसी फिजिकली किसी चीज के लिए स्ट्रगल, उसको टसल कहते हैं, फाइट. सो उसको टसल कहते हैं. तो स्टूडेंट्स हैड अ टसल over the words. This is the correct answer. Next question. I have been waiting for you dash the last 3 days. This is very good question is given here. So इसमें the confusion होता है हमारा for और since को लेके. ठीक है, for और since लेके confusion होता है. So for और since generally हम use करते हैं दो tenses में. एक है present, एक है present perfect tense और है पास्ट परफेक्ट टेंस. सो जनरली क्या है, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में ही ये दोनों फॉर और सिंस को यूज करते हैं हम लोग. लेकिन इसमें से थोड़ा सा रूल्स है यूज करने के लिए. सो ऐसा रूल्स है कि फॉर हम तभी यूज करते हैं जब एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, लेकिन क्या होता है कि पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलरली द टाइम मोमेंट को मेंशन नहीं किया जाता. लाइक एग्जांपल, आई हैव बीन रीडिंग for 4 hours, but you do not know when you have started the reading, correct? Similarly, अगर since की बात करते हैं तो since ऐसा होता है कि जो particular time को mention किया जाता है, time is determined here, time is completely determined here, mentioned here. जैसे कि I have been reading since 7 a.m. So 7 बजे से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ.
और 3 घंटा से पढ़ाई कर रहा हूँ। सो जब मैं बोलता हूँ 3 घंटा से पढ़ाई करता हूँ, तो उसमें से क्या होता है कि जो टाइम होता है वो ड्यूरेशन दिया होता है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए हम उसमें फॉर यूज करते हैं। और सिंस तभी यूज करते हैं जब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर टाइम इज डिटरमाइंड, जब मेंशन किया जाता है, उसमें हम सिंस यूज करते हैं। जैसे कि और एग्जांपल हम ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर, लिविंग हियर फॉर 7 इयर्स। ठीक है, तो 7 इयर्स से हम यहाँ पे रह रहे हैं, बट 7 इयर्स कौन सा साल में, कौन सा ईयर में, कौन सा डेट में, वो मेंशन नहीं है, जस्ट एक ड्यूरेशन दिया हुआ है टाइम का, तो इसमें से हम फॉर यूज करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा ऐसा बोलेंगे कि आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000, सिंस 2000, देन इसमें सिंस होगा, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली जो टाइम है उसको मेंशन किया गया है। तो सिंस और फॉर ऐसे यूज करते हैं। आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट। सो फर्दर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क रिगार्डिंग सिंस और फॉर। और सबसे पहले सिंस ये समझ लो कि सिंस और फॉर को हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, आइदर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट और फॉर पास्ट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हम तभी यूज करते हैं जब जो टाइम एग्जैक्टली इज मेंशन्ड, है ना। जैसे कि मंडे से आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग सिंस मंडे, सो उसमें मंडे होगा। बट आई हैव बीन सफरिंग फॉर मंडे, तो वो फिर गलत होगा, और फ्रॉम मंडे वो फिर गलत होगा। सो आई हैव बीन सफरिंग सिंस मंडे। ठीक है, सो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम 3 days, फॉर दैट इज करेक्ट, फॉर 3 days दैट इज करेक्ट। आई होप कि समझ में आ गया सिंस और फॉर। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 3 days, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि कौन सा डेट से कौन सा टाइम से आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सो इसमें फॉर होगा, सिंस नहीं होगा। नेक्स्ट लेट्स सी दैट द वैल्यू सिस्टम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस डैश टाइम इमेमोरियल। तो इसमें भी सेम ही है, सेम ही लॉजिक यूज करना है। हैज बीन इसमें दिया हुआ है, तो वैल्यू सिस्टम जो है इन एग्जिस्टेंस, क्या है, एग्जिस्टेंस फॉर टाइम इमेमोरियल, है ना, फॉर टाइम इमेमोरियल। वैल्यू सिस्टम बहुत दिन से चली आ रहा है ना, वो इमेमोरियल टाइम से चली आ रहा है, तो इसमें फॉर होगा, क्योंकि उसमें पता नहीं है कि कब से ये शुरू हुआ है। ठीक है ना। So this is what next item of the questions is fill in the blanks with appropriate conjunctions. So हम लोग conjunction use करेंगे. So first question is I was reading the newspaper dash Sachin came to me. So इसमें से दो एक्शन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। So let's see that I was reading the newspaper. So एक प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। So हमेशा याद रखना है कि एक अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा और दूसरा एक्शन जो होगा वो भी पास्ट 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 इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो दोनों टेंस सही में है, तो इसमें कौन सा यूज करेंगे? इसमें ऐसा होगा कि आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर। ओके, आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर देन सचिन केम टू, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम होगा ना, देन होगा ना, सिंस होगा। कौन सा क्या, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, इसमें दो दो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दो एक्शन दिया हुआ है, इसमें समझ लेते हैं। सो ऐसा है कि दो एक्शन जो है एक साथ ही हो रहा है कि एक के बाद दूसरा हो रहा है? एक के बाद दूसरा हो रहा है, कौन सा हो रहा है? एक से, सो यहाँ पे ऐसा हो गया कि आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर डैश सचिन केम टू मी। सो इसमें फर्स्ट एक्शन क्या दिया हुआ है कि आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, ये एक एक्शन है। उसके बाद सचिन केम टू मी, इसका मतलब जो जब हम पढ़ाई कर रहा था उसी समय सचिन आया है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें से एट दैट टाइम होगा, है ना, एट दैट टाइम होगा, मतलब उसी पॉइंट पे वो आया है। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक 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 इंसिडेंस पहले हुआ है उसके बाद दूसरा इंसिडेंस हुआ है, तो उसके उस समय हम देन यूज करते हैं, जैसे कि जैसे कि लाइक आई हैव द ट्रेन हैड लेफ्ट, the train had left, then I reached there, right? The train had left, then I reached there. So then THAL तब हम यूज करते हैं, तो इसमें at that time होगा, उसी समय सचिन पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so both Millie is a very easy question, both Millie and Meena are beautiful, इसमें and होगा,
हमको पता है कि दो चीजों को जब हम एक साथ, दो नाउन को हम एक साथ जोड़ते हैं उसमें एंड यूज करते हैं, है ना, उसमें एंड यूज करते हैं। सो और एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सो यू यूज बिटवीन when there is two numbers, correct? Like, please distribute the chocolates between Ram and Shyam. So इसमें two numbers जब भी होता है तब हम between का यूज करते हैं, और among का हम तभी यूज करते हैं जब more than two numbers are there, more than two numbers are there, है ना, more than two numbers are there। लाइक एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो इसमें से मोर देन टू जब भी होता है तब हम अमंग यूज करते हैं, और जब टू का यूज होते हैं तब हम बिटवीन यूज करते हैं, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो सूनर डिड यू रीच द स्टेडियम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। No sooner did we reach the station, dash it started cats and raining cats and dogs। जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे इन द फर्स्ट क्वेश्चन में, कि अगर दो इंसिडेंट्स होगा, एक पहले होगा और दूसरा सेकंड में होगा, उस समय हम दैन का यूज करते हैं, THAN का यूज करते हैं। तो इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा एक्शन पहले हुआ है। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो इससे पहले, सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ है, वी रीच द स्टेडियम, ये पहले हुआ है, उसके बाद रेनिंग शुरू हुआ है ना। तो इसमें से क्या आंसर क्या होगा, डैन होगा, THAN। इसमें से बहुत सारा लोग गलती करते हैं, वो THEN लिखते हैं, वो गलत है, ठीक है। सो जब भी हम दोनों एक्शंस को, टाइमिंग को हम इंडिकेट करते हैं तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, डैन यूज करते हैं, THAN, डैन यूज करते हैं, ठीक है। Okay, next question. I shall take care of you. Dash, you are my younger brother. Is very easy questions because you are my younger brother. It is very easy questions. Next question is, he is neither a friend. Neither के साथ हमेशा क्या आता है, nor आता है, हमको पता है। And either के साथ हमेशा और आता है। Either के साथ हमेशा और आता है, और neither के साथ nor आता है ना। So nor is the correct answer. Next items of questions are, fill in the blanks with appropriate question tag. This is very, good topic. Then I think you all people should be expert in question tag. Question tag को हमको use करना आना चाहिए, ये हर एग्जामिनेशन में आता है। So generally, before we start discussion about question tags, I would like to tell you, generally there are two types of question tag। एक को कहते हैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग, है ना, एक है नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, और ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव क्वेश्चन टैग मतलब, अगर द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव, देन वी यूज नेगेटिव सेंटेंस। लाइक एग्जांपल, शी इज ब्यूटीफुल। सो शी इज ब्यूटीफुल, ये शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, ये एक क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये अगर पॉजिटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कौन सा होगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा, लाइक शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ये क्वेश्चन क्वेश्चन द सेंटेंस इटसेल्फ आर नेगेटिव, तो उस समय हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। तो हम ऑपोजिट यूज करते हैं, क्या ऑपोजिट यूज करते हैं, अगर अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, और अगर सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव क्वेश्चन टैग, है ना। और क्वेश्चन टैग क्या होता है वो तो पता ही है सबको। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है उसी का भाग को लेके हम क्वेश्चन ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, है ना। सो नेगेटिव क्वेश्चन टैग फॉर पॉजिटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव क्वेश्चन टैग फॉर नेगेटिव सेंटेंस। But if you want further discussion on question tag, so you can write in the comment box. So we can have a video completely on question tag, right? So let's see the answers of these questions. So first question is, you are not well today. So you can see that the question is negative here. So if the question is negative, if the sentence is negative here, definitely the question tag should be positive, correct? Definitely the question tag should be positive, right? So we have to use a positive question tag here. So now you are not well today. So you see what is the positive question tag is there. So here with you are is there. So definitely you is the correct answer because subject you will remain the same. So with you we use the to be verb that is are. So isme are not is given here and are that is the positive question tag, and the earlier in the sentence are not is there, that is negative. So we will use the opposite of it. So are you is the correct answer.
You aren't well today, are you? Next question is, it's a fine morning. So the you see the sentence is positive question tag. So sorry, the sentence is positive. So you will use negative question tag. So let's see that what is the negative is there. So is it negative or positive? No, it's a positive, so it's not correct. That is not it. Yes, the correct answer is not it because it is negative. Is there? It is there. So we will use the negative question tag here. It is a fine morning. Is not it. This is the correct answer. Next question is, it rained yesterday. So it rainy study is a positive sentence, right? So positive sentence means what? So definitely we will use the negative question tag. Now one more thing I'll tell you. It rained yesterday. So rained is a which tense it is? It is in past simple past tense, correct? It is in simple past tense. Now we know that whenever we use simple past tense, we have to give the second form of the verb, means the past form of the verb. So it rained yesterday. So इसमें ऐसे इसमें से अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो कौन सा वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है? हैज इट ये सेकंड फॉर्म में नहीं है, हैड इट ये सेकंड फॉर्म में नहीं है, हैड डिड नॉट इट। सो इसमें रेन्ड है, पॉजिटिव है, डिड नॉट नॉट तो नहीं आएगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग तो नहीं आएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। सो आंसर इज डिड इट। ओके, सो इट रेन्ड यस्टरडे, डिड इट, दिस इज द करेक्ट आंसर। Oh, sorry, did not it. I'm sorry, because it is positive there. So negative question tag we have to use. So did not is the correct answer. Did not is the correct answer क्योंकि इसमें से positive sentence है तो negative question tag हम use करेंगे. Similarly, in the next question, there was a large crowd. There was a large crowd. So was a large crowd is positive positive sentence. Definitely we will use negative question tag. So जब ऑप्शंस में से देखेंगे कौन सा नेगेटिव में है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जो नेगेटिव में है, was not there. This is the correct answer. Was not there. ठीक है. Next question is, they haven't much money. So they haven't much money. Simple questions. Happens is there. We have to make it opposite, means positive question tag. So what is positive is there? Have they is there. So definitely have they, right? Have they. We do not change the tense. Okay, the tense always remains the same in the question tag. Like have they is there. Don't write had they, because always in question tag the the tense remains same. So this is what about question tag. If you have more discussion on question tag, please write in the comment box so we can have a discussion on it in details regarding question tag. Okay, some of the questions are given here, very easy questions. So you have to choose the correct spelling for it. So by looking, you can understand it. Appearance, option D is the correct answer. Appearance. Then here companion, option D again is the correct answer. Then certificate, option A is the correct answer. Certificate, oh sorry, not option A, option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Certificate. Then exercise, definitely exercise, option D is the correct answer. Correct. Then energy, option C is the correct answer. Okay, next articles we will see. So he is an app. Okay, he is an app, which is obviously A should be used here. What is the meaning of the nap? Can you tell me, anybody? Nap means, what is the meaning of the nap? Nap means tricky or deceitful, correct? Nap means tricky or deceitful. So option A is the correct answer. Then, then before Ganga, we definitely use the. Okay, so the water of the Ganges never gets polluted. The next question is, I want to buy an umbrella. So we use an before umbrella because it sounds, the vowel sound is there. If the word, the sound begins. So, okay, so we know that article about it. Uh, so here I want to, okay, so these 22 questions that we solved today. Okay, these 22 questions we solved today. Now, rest of the questions you will see in the next video. By the time you people can see it, okay.
So rest of the question we will solve it in the next videos. So please do like, share, and comment if you have any queries, or if you want have if have any special requirements of discussion of any topic. So you can write in the comment box. So we can definitely try to bring a video on it. So by the time, stay tuned. So keep learning. Thank you.